Uh, Good morning, everyone. As you know, every Saturday we'll conduct different activities. That's called the UA Josh Club activities. So today's topic is quiz on COVID-19. कोरोना वायरस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट. ओके, तो हम लोग देखेंगे कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में, कितना पता है इसके बारे में. ओके, क्विज उसके बारे में ही रहेगा. ओके, तो shall we start the question? Yes, sir. Okay, Lalita ma'am, just bring the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, व्हाट इज कोरोना वायरस और कोविड-19? क्या है कोरोना वायरस? वायरस वायरस के बारे में क्या पता है आपको? क्या है कोरोना वायरस? Coronavirus is an infection. This virus came from China, as we know, and it affect our lungs. It affect our lungs, and it causes death also. That's it, sir. I know. Anyone else? You can share more knowledge if you know more about this virus. Only China से आया सो है, कहाँ से आया सो है, in which city in China? Wuhan, sir. Okay, Wuhan. So anyone just give the full answer about coronavirus. If you can share more information about this. Good morning, everyone. Very good morning. Coronavirus is a disease. It is coming from China, from the city of Wuhan, and this disease need a distance. Who is suffering from this disease, and it has if it is affecting for old age and like 30 plus or like this, and who is affecting before under this age, like elder adults, they can recover easily from this disease, and it need immunity, good immunity to recover very well, and cleanness, hand wash is compulsory. Okay. Anyone else? और कोई शेयर करना चाह रहे हैं आंसर? You can get 1 point. Hi everyone. So basically, coronavirus is a disease which is very dangerous, and it mostly, people fell sick due to this, and it has moderate symptoms. Yes. Yeah, continue. Just tell your name also so that we can know who is giving the answer. Okay, before giving My answer. name is Nagina. Okay. Anything else? Good morning, sir. My name is Bhavani. Yeah. Coronavirus came from China, and exactly we don't know. It is from animals or from their labs. So it has spread so much, too muchly in 1 year only, and it having different types of symptoms like a fever and couch cold, like that. So we have to maintain social distance and wash our hands like when we go out or when we stay in home, some like few times in a day we have to wash the hands, so we can save our life from this. And who got this problem, they should
in quarantine for 14 to 15 days or more than that. So it mostly affecting the everyone, but the old people above 60 hours 70 sorry 60 years 70 years, they are mostly affected to this virus. They have to um, check their means pulse rate daily, so that they can from other people, and taking immunity foods like citrus fruits and eggs, non-veg, and who are vegetarians, they can take green leaf vegetables. So we and now we have vaccine also. So so many people don't aware of this vaccine. Uh, who are aware, they could say, they can say to others, they can encourage the people uh, who scared to take the vaccine, and like that people can means little bit of this pandemic will be reduced by taking the vaccine. Okay. Okay. Good. Anyone else want to Yes, me. give the answer? Good morning, sir. I'm Morning, everyone. My name is Nabil Ahmad Siddiqui. Today I am about discussing what is coronavirus. Coronavirus Your is a voice disease. is not audible. Okay, sir. One second. I will check. Okay. Continue. Now, sir. I'm telling. yes, sir. Sir, coronavirus is a disease COVID-19 in influenza disease caused by newly discovered coronavirus. Most people who fall sick with COVID-19 will experience the negative symptoms and recover without special treatment. Okay. Sir, Yeah. Just my give. name is Mohammad Karim Khan. I am telling about coronavirus. Coronavirus disease is an infection disease caused by a newly discovered coronavirus. Mostly people have feel with COVID-19 will be experienced immediate to moderate smotax and recover without the specialist treatment. Okay, sir. Okay. Don't just read from the internet. Just I want you to honestly give only your answer. नेट ओपन करके या लिखकर कहीं से देखकर मत दीजिए. Just give your answer, what you know about that only. Okay. चलिए Basically, क्या it's ललित an respiratory infection which causes in humans. या चलिए ललिता मैम एंड अंजुम मैम Yes, sir. just give your points who you want to give. किसको इसका पॉइंट देना चाह रहे हैं आप लोग? किसका डेफिनेशन अच्छा दिखा आपको, आंसर अच्छा दिखा? जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड राइट वन पॉइंट. Okay. Okay, sir. अपने नोटबुक Round पे one. लिख लीजिए. Okay. 1 plus. Yes, Okay. sir. एंड ललिता मैम आप भी नोट कीजिए पॉइंट्स और Yes, जिसका sir. आंसर करेक्ट दिख रहा है आपको. एंड नाउ यू कैन शेयर द आंसर विद देम. उसका करेक्ट आंसर क्या है वो शेयर कीजिए. Abhi, sir. हाँ अभी सभी का हो गया ना? एनीवन want to share the answer? Anyone want to give? Or No, sir. okay. तो Sir, शेयर can कीजिए you आंसर share शेयर the कीजिए. answer? Yeah, Hello. share this answer here. Right now, sir. हाँ Yes. orally, or you can say the orally अगर if you Okay. just you can explain the orally or you can share the answer. Okay, sir. Just a minute. Okay, orally I will share some point about this. Coronavirus is a kind of virus that causes an infection in your nose.
Okay, it will start from your nose. उस वहाँ से स्टार्ट होता है इन्फेक्शन वगैरह, साइनसेस, अपर थ्रोट, वाइंड पाइप और लंग्स पे अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन में रेंज फ्रॉम मिड टू डेडली, क्योंकि स्टार्टिंग कम से ही होता है, सर्दी, बुखार, कोल्ड, फीवर, ओके, स्टमक पेन, बॉडी पेन। मेनी पीपल आर टेलिंग दे आर हैविंग बॉडी पेन और स्वेलिंग इन लेग्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो वर्किंग एज ए वॉलंटियर, मनम वॉलंटियर हम लोग भी वर्क कर रहे हैं। तो कॉल्स आते तो हम लोग को ये प्रॉब्लम्स मालूम रहते सभी के, क्या क्या वो लोग सफ़र कर रहे हैं इससे। ओके, ठीक है, दिस इज वन आंसर अबाउट कोरोना वायरस। Okay, sir. Okay, now we'll move to the next question. This is your next question. How many countries, areas or territories are suffering from novel coronavirus outbreaking in the world? कितने कंट्रीज सफ़र कर रहे हैं? इसमें ऑप्शन है आपको, मल्टीपल चॉइस। गिव योर करेक्ट आंसर, नेम एंड करेक्ट आंसर। Only one time you have to think about that and give. Only one time we are noting. Yes. You don't have to search on the internet. Just give your answer. Honestly. Sir, Bhavani, more than 200 countries. Fourth one, sir. I think it's more than 150 countries. Okay, note down their answer, Anju madam. Bhavani Yes, is more sir. than 200 and what's her name? More than 150? Maimuna. Maimuna. Okay. Anyone else want to give the answer? Just give first. Yeah. More than 150 countries. What's your name? Okay. Anyone else? From boys side, Fardeen, Sheikh Azam. Yes, sir. More than Just 150. mute. We are having some disturbance here. Just mute your mics, those who are not speaking. Okay, now forward. Anyone else want to give the answer? Because we are going to tell the answer for this. So the correct answer is, shall I give the answer? Or you want to? Yes, Fardeen Khan. What's the answer? Fardeen, Azam. What happened? Both of Yes, you. everyone can participate. It can be between 150 to 200. Ma'am, more than 100 countries maybe, I think. Okay. This is Fardeen, No, ma'am, Azam. Azam. Two. Next. Okay. Anyone else? Okay, just tell the correct answer for this. Lalita madam? Yes, sir. It's more than 200 countries. Okay, the fourth one is the correct one. More than 200 Correct. countries are suffering from this coronavirus. Okay, 200 के ऊपर कंट्रीज है जो सफर कर रहे हैं। हर जगह फैल चुका है ये वर्ल्ड में। ओके, जस्ट गिव पॉइंट टू द करेक्ट आंसर। जिसने करेक्ट दिया है उसको पॉइंट दीजिए एंड मूव टू द नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. What are the organs most affected by COVID-19? Lungs.
My Name. name your is Give your name name. first. Okay. Heart, affected kidney, liver, organ, lungs. Yes, ma. Tell your name lungs. and give the answer. My Yes, name is my name- Sunil. From COVID-19, the affected organ is more lungs. Lungs. Anyone else? Sir, my name is Bhavani. One lung. Most affecting to lungs, but nowadays it mostly affecting to all parts like heart, kidney, liver also. Hmm. Okay. So we have to say Anyone? one answer or all can say, sir. Sir, my name is Mohammad Fazil. You can say all also, agar if you think that. Okay, Yeah. sir. Okay, sir. Yeah, Azam. Yes, sir. Myself, Sheikh Azam. First, it affect the lungs because first it's passed through the lungs, so it's affect the lungs. Okay. Anyone? Sir, most affected by lungs and heart. Okay. This is Fardeen. Okay. Anyone else? किसी और कोई और बोलना है? तो इसका करेक्ट आंसर है लंग्स मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स. ओके, सबसे पहले ये लंग्स पे ही अफेक्ट करता है. ओके, जाकर ओके जस्ट गिव पॉइंट्स टू द करेक्ट आंसर. लंग्स से ही होकर बहुत से लोगों को दूसरे भी प्रॉब्लम्स पे अफेक्ट हो रहा है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लंग्स में ही लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं बहुत से लोगों के उससे ही. ओके, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Can COVID-19 be detected by CT scan? No, CT sir. scan से who Yes, is this? yes, sir. Bhavani. Yes, sir, Bhavani, yes. So yes, Yes, it can be anyone detected by CT scan. CT scan से डिटेक्ट कर सकते हैं क्या कोरोना वायरस को? Yes, sir. Myself, Shirin Fatima. Yes, it Hmm. can be detected by CT scan and calling also HR CT like this name to test this disease. Okay. Anyone? Yes, sir, can detected by CT scan, but along with some test, COVID test. Hmm. Anyone else? No, sir. No. Okay. तो अभी तक किसी ने कराया है यहाँ पर टेस्ट कोविड का? सर आप में से किसी ने टेस्ट करे हैं कोविड का या वैक्सीन? Have you taken the No, vaccine? sir, but I heard from one of my family member. She went to take the CT scan. Hmm. That's Okay. So I will give you the correct answer. So correct answer is yes. COVID can be detected by CT scan along with laboratory testing when there is a high technical suspicion of infection. Okay. CT स्कैन से भी मालूम हो जाता है उसका. ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे टेस्ट भी है जो डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो करेक्ट है. पॉइंट दीजिए जिसने यस बोला है. ओके, नेक्स्ट. कैन द COVID-19 सर्वाइव इन ड्रिंकिंग वाटर? वायरस जो ड्रिंकिंग वाटर में है उसमें सर्वाइव कर सकता है, उसमें रह सकता है क्या? यस सर नो. Yes, sir. yes, sir. गिव योर नेम. Bhavani, Yes. sir, yes. और नो? Memona, sir. यस. ओके, Memona? Yes, यस ma'am. बोल रहे हैं. यस. सर लिक्विड से भी सरवाइव कर सकता है सर, पता नहीं.
सरवाइव करता है क्या बोल रहे हैं उसमें, वाटर में सरवाइव करता है क्या वो, पानी में Maybe, पानी में sir, मिलकर आ सकता है क्या वो, पानी में भी रह सकता है क्या? Sir, nothing. Sir, I sir, think myself पानी से feeling maybe. सरवाइव का मतलब ये भी हो सकता है कि स्प्रेड हो सकता है क्या पानी से, वो भी हो सकता है। अगर पानी में सरवाइव हुआ तो हर जगह वो स्प्रेड भी हो सकता है पानी के जरिए, yes, sir. I भी हो know. सकता है। Sir, my क्या दिख opinion रहा है is no. आप? Sir, my opinion is no. व्हाट्स योर नेम? Sheikh Azam. हाँ Sir, सर, Arhan Didi. I also no. ओके। Myself, एनीवन? Subain Fatima. I think no, sir, because we are doing hand wash so as to save from this disease. So I think no, it cannot survive in the water. ओके, एनीवन एल्स? और Yes, sir. Next question. so correct answer is no. Right now there is no evidence of it surviving or spreading in water. पानी के अंदर सरवाइव करना और स्प्रेड होना उसके कोई एविडेंस नहीं है अभी तक कि पानी से फैलता हो या पानी में रह सकता है वो। तो आंसर करेक्ट आंसर नो है इसका। अभी तक कोई अच्छा इंफॉर्मेशन या एविडेंस नहीं है उसका अभी तक। ओके Yes, sir. okay Okay, just sir. move to the next question. At what temperature does COVID-19 virus die? कौन से टेम्परेचर में COVID-19 खत्म हो सकता है? Bhavani sir, Uh, 60 to 70. 60 to 70 you're saying. Anyone else? कौन से टेम्परेचर में खत्म हो सकता है वो? आप देख रहे हैं गर्मी में भी बहुत सारे हो रहे हैं अभी केसेस। अभी तो टेम्परेचर 40 तक नियरली 40 तक भी हो रहा है, फिर भी वायरस तो फैल रहा है अभी। Yes. तो हाईएस्ट टेम्परेचर या लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है उसका? Anyone wants to give the answer? Yes, sir. किसी को I think more than 60 degree. I think. more than 60 degree. Okay. Shall I give the answer? Yes, sir. 60 I think. और ना गर्मी में जब हो रहा ना सर्दी में टेम्परेचर बीच में मीडियम में ही हो रहा हो और अपनी बॉडी के ऊपर है वो Okay. 60 so 65 to 70 maybe. 65 degree. okay. Give your name also so that our trainers will give you the marks. अपना नेम भी बोलिए ताकि करेक्ट आंसर है तो आपके पॉइंट्स भी आ सके। सर हाँ से देखिए 60 पर सेल्सियस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा गिव योर नेम ऑल्सो, नाम भी बोलिए ताकि हम आपके मार्क्स भी ऐड कर सके नेम्स के साथ। अगर करेक्ट है तो आपका आंसर। ओके मुस्कान तो, बेगम सर। ओके सर हाँ से और देखिए किसी को 66 okay 60 सर 16 not 66 60 okay 60 you are saying. और तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है यस बट एट 65 डिग्री सेल्सियस। 65 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री के ऊपर इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हैज़ द वायरस वाज नॉट किल इवन इन द समर सीजन। समर में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वायरस ख़त्म नहीं हुआ।
लेकिन वो बोल रहे हैं कि 65 डिग्री के ऊपर रहा तो इसको ये खत्म हो सकता है वायरस। ओके, तो करेक्ट आंसर 65 डिग्री है इसका, अबाउ 65 डिग्री सेल्सियस। ओके, Yes. let's move to the next. How is corona virus spread? इसको कैसे ये स्प्रेड हुआ, आपको क्या पता है इसके बारे में? कैसे कोरोना वायरस फैला या फैल रहा है या कहाँ से स्टार्ट हुआ? Sir, myself Shireen. It is coming. It is a start from China, but I think who is positive people, corona positive people who is coming and meeting with people. It is increasing like this. If they quarantine themselves, maybe they could not increase like this. So it is spreading by positive people and from maybe from immunity low or like this. But not know exactly what is the reason it is coming. Okay, what's your name? Shireen, sir. Okay, anyone else? Sir, Bhavani. Yeah. Actually, the people who are affected with COVID, if they got like fever or couch cold, if they are means full of the khaste na sir, at that time they have to keep their hands or kerchief or tissue like that. If they're using their hands, the virus will be on their hands. So if they went to the other people who are